Hello students, the question is a positively charged particle with charge 2 microcoulomb is stationary in space in the influence of vertical uniform electric field of 5 Newton per coulomb. If the electric field is switched off, then the acceleration of the charged particle will be. So the problem is based on the topic the force in an electric field and the gravitational force. Basically this is the situation in which there is a charged particle in space and there is a force which is upward, which is in the upward direction due to the electric field, and there is a force, gravitational force, in the downward direction due to earth gravitation. So these two forces are balanced because the particle is stationary. So the electric force is equal to the gravitational force. Now the electric force is given by F equals to QE and the magnetic force is given by mg. So when it is in balanced state, this QE is balancing the mg, and when the electric field is switched off, it means that the force, this force becomes zero and the particle moves in the downward direction under the influence of this force only, the gravitation force only. So when the particle is moving under the influence of gravitation force, the acceleration is due to the acceleration of gravity, gravitational acceleration, and the gravitational acceleration is given by small g. So small g, this is the final answer, and we know that the value of g is 9.8 meter per second square, nearly equal to this value. So the particle will move in the downward direction with this particular acceleration. So this is the answer of this particular problem. Now suppose if in this problem, instead of the acceleration, we have to calculate suppose the mass, then the problem can be solved like this: mass is equal to QE upon G, and the value of Q is given here as 2 microcoulomb, which is 2 into 10 to the power minus 6. E is given as 5 Newton per coulomb SI unit, so no need to change. G, for example, for the sake of simplicity, we take it as 10 because 10 is nearly equal to 9.8. So if we take it as 10, so the value of mass comes out to be 10 raised to the power minus 6 kgs. So this is the mass of the charged particle if the problem asks this particular value. But in this particular problem, the student which asked this problem is only asking about the acceleration. So acceleration is given by the gravitation acceleration, which is 9.8 meter per second square. So that's the answer. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी है एक स्टूडेंट ने, उसने इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, स्टेशनरी है स्पेस में। स्टेशनरी होने का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस किए हुए हैं एक दूसरे को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। तो ये सिंपल एनालिटिकल प्रॉब्लम है कि इसमें सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया, पार्टिकल जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आने लगेगा सीधे सीधे, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है, अलग से किसी फोर्स के बारे में बात नहीं की गई है, ना किसी विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स की यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वैल्यू g के बराबर होती है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। और अगर इस प्रॉब्लम को दूसरे तरह से पूछता था, सपोज अगर क्वेश्चन मेकर इसमें मास भी पूछता, तब उस कंडीशन में हम जो है इस इक्वेशन से जो है मास भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है QE के बराबर, ग्रेविटेशन फोर्स है mg के बराबर, इन दोनों को हमने इक्वल करके लिख दिया। तो यहाँ से g की वैल्यू को हमने पुट करके m निकाल लेंगे, क्योंकि Q भी गिवन है हमें, E भी गिवन है, G हमें नोन होता है डेटा से। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज पुट करके इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में केवल एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।